Giridhari Gopi Janavalabha Giridhari Yashodanandana Brajajana Anjana Yashodanandana Brajajana Anjana Yashodanandana Brajajana Anjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tera Vanachari Jamuna Tera Vanachari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radha. Jaya Sitaram Lakshman Hanuman Sitaram Jaya Lakshman.
Jaya Vishnupad Paramahamsa 𝒍𝒂𝒂𝒚𝒔 Ashtotra Satat Systematic Divine Grace ISKCON Faridabad 𝒍𝒂𝒂𝒚𝒔 𝒍𝒂𝒂𝒏𝒕 Bhakti Swami Prabhupada Maharaja Ki Jai. Jaya Vishnupad Paramahamsa 𝒍𝒂𝒂𝒚𝒔 Ashtotra Satat Systematic Divine Grace 𝒍𝒂𝒂𝒏𝒕 Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Prabhupada Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavina Ki Jai. Namacharya Sri Haridas Thakur Ki Jai. Prem Si Kahav Si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Si Advaita Si Devi Bhakti Devi Ki Jai. Samavena Bhakti Vena Ki Jai. Nitai Gaur Premanande. All glories to the seven devotees. All glories to the seven devotees. All glories to the seven devotees. All glories to Siguru and Guranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Our time is already far gone. But 24. yeah. So we do the 24, okay? All right, so welcome everyone to this morning Srimad Bhagavatam class taking place right here in the great city of Faridabad. तो मैं बहुत कृतज्ञ अनुभव कर रहा हूँ फरीदाबाद में भागवतम क्लास देने के लिए. So the title of this chapter is The Story of King Vena. तो इस अध्याय का शीर्षक है राजा वेन की कथा. Avajanantyami mudha Riparupinam Ishwaram Nanuvidanti te badram Ihaloke paratracha Avajanantyami mudha Riparupinam Ishwaram. Can someone try? Anyone else? Anyone else? Anyone else? Any more Mataji's? 2 more Mataji's to match up with the men.
Thank you very much. Word for word translation and translation by His Divine Grace, ISKCON Faridabad, 𝒍𝒑𝒂𝒚𝒔 Bhakti Swami Maharaja ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Very good. So, word for word translation: Avajananti, disrespect. Ami, those who. Mudaha, being ignorant. Riparupinam, in the form of the king. Ishwaram, the personality of Godhead. Na, not. Anuvidanti, experience. Te, de, badram, happiness. Iha, in this. Loke, world. Paratra, after death. Cha, also. Translation: those who are out of gross ignorance do not worship the King, who is actually the Supreme Personality of Godhead, experience happiness neither in this world nor in the world after death. Please responsibly repeat. Those who out of ignorance do not worship the King, who is actually the Supreme Personality of Godhead, experience happiness neither in this world nor in the world after death. This is an amazing text. ये बड़ा ही सुंदर श्लोक है. महाराज, should I repeat in Hindi this translation? Yes. तो अनुवाद इस प्रकार है: जो लोग अज्ञानतावश उस राजा की पूजा नहीं करते जो कि वास्तव में श्री भगवान हैं, तो वे न तो इस लोक में और न परलोक में सुख का अनुभव करते हैं. Vande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodato Gododaya Puspawanto Chito Chandu Tamonundo Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Se Advaita Gadada Sivasari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Pisaya Bhutale Smate Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Deva Gauravani Kacharine Nirvise Vancha Kalpatari Vyacha Kripasundhya Evacha Paditanam Pavanandya Vaishnava. So, welcome everyone. And this text is very amusing to me, you know. तो आप सब लोगों का स्वागत है. और ये जो श्लोक है काफी अचंभित करने वाला है. Because this is King Vena speaking. तो ये राजा वेन बोल रहे हैं. King Vena is a very sinful king. तो राजा वेन जो है बहुत ही पापी राजा है. But he is quoting scripture as to be able to get his citizens to worship him like a Raja Rishi. But he is not a Raja Rishi. तो वो शास्त्रों का उपयोग कर रहे हैं लोगों को ये बताने के लिए कि मेरी आप पूजा करो राजर्षि के रूप में, बट वो वास्तव में राजर्षि नहीं है. The description here that King Vena is making it fit for Raja Rishis. Raja Rishis are kings, very great kings, and they are at the same time very advanced sages, riches. तो वो ऐसा लोगों को जता रहे हैं कि वो एक राजर्षि हैं, बट जबकि राजर्षि जो हैं एक बहुत ही महान राजा होते हैं, साथ के साथ एक उन्नत साधु भी होते हैं. Now, for those of you who have been following up with this story, King Vena is the son of King Anga. तो जो आप लोग इस कथा से परिचित हैं,
तो राजा वेन जो हैं राजा अंग के पुत्र हैं. And when King Anga left this world, the sages came together and enthroned Vena as a king. तो जब अंग शरीर त्याग करते हैं या राज्य छोड़ के चले जाते हैं तो सारे ब्राह्मण इकट्ठा होके राजा वेन को राज्य पे नियुक्त करते हैं. When the sages appointed crown King Vena as a king, the ministers, they didn't like it. तो जब वेन को राज्य पद पे नियुक्त किया गया तो वहाँ के मंत्रियों को अच्छा नहीं लगा. But this is what the sages want, so everybody has to go with it. तो वही राज्य के लोग चाहते थे तो इसलिए सबको उसके साथ एक होना पड़ा, एक मत. The ministers felt that Vena was not qualified. इसका मतलब है कि वेन जो है अयोग्य था. Because he was cruel. क्योंकि वो दुष्ट थे. And for you to rule a community or a kingdom, you need to be kind. तो किसी संगठन को या फिर किसी राज्य को चलाने के लिए सबसे परम आवश्यक है कि आपके अंदर दया होनी चाहिए. You need to be compassionate. करुणा होनी चाहिए. You need also to be people oriented. तो आप व्यक्ति विशेष की तरफ आपकी रुचि होनी चाहिए. Vena was none of these. वेन उसमें से कुछ भी नहीं था. But he was the heir to the throne. His father left him behind, and the sages, they had to enthrone him. तो बट ये राजा वेन क्योंकि अपने पिता का उत्तराधिकारी था तो ब्राह्मणों ने और मंत्रियों ने उसको उस राज्य के राजा के रूप में नियुक्त कर दिया. So one of the good qualities of, in quote, of Vena was he was very tough and cruel. It means that there will be no room for nonsense for thieves and criminals. तो एक तथाकथित अच्छा गुण उसमें यह था कि वो बहुत कठोर था और क्रूर था. तो सारे चोर उचक्के उसे डर के भाग गए. Because when criminals see a police, they take to their hiding. They run away. तो जब क्योंकि कोई चोर अगर पुलिस को देखता है तो वो भाग जाते हैं, वहां से छुप जाते हैं. When a tough king is ruling a kingdom, there will be no crimes. तो कोई कठोर शासक अगर राज्य करता है तो कोई अपराध नहीं होता उस राज्य में. Because if you commit any crime and you are apprehended, you will be given maximum punishment. तो अगर आप कोई अपराध करते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा दंड मिलेगा उसके बदले. And King Vena was a good fit for that. तो किंग राजा वेन उसके लिए बिल्कुल योग्य था वो दंड देने के लिए. So when he was enthroned, the criminals started running away from the kingdom. तो जब राज्य के पद पे नियुक्त किए गए राजा वेन तो सारे चोर जो है भाग गए डर के. But that's a normal thing that someone may even be good, but if he's given some power or she's given some power, their real quality will come out. तो एक सामान्य बात है कि लोग अच्छे होते हैं लेकिन अगर कोई उनको पद दोगे कोई पदवी दोगे तब उनका असली गुण बाहर निकल के आता है. And if they are bad, their inner bad quality will come out. तो उनके जो आंतरिक जो दुर्गुण हैं वो बाहर निकल के आते हैं. And so there was some occasion that Vena, when he was after being enthroned as a king, he would ride on a chariot and travel all over the kingdom, and give people very horrible instructions. तो वर्णन आता है कि जब राजा वेन राज्य करते थे तो रथ पे राज्य के भ्रमण पे निकलते थे और जहां जहां लोगों से मिलते थे बहुत ही भयानक निर्देश देते थे उनको. And so in this very text, he is telling the citizens that, see, you have to worship me.
तो यही एक वर्णन आता है यहाँ पे कि वो राज्य के लोगों से कहते हैं कि देखो मेरी पूजा करो. He said, those who are in gross ignorance, they will refuse to worship me. वो कह रहे हैं कि जो घोर अज्ञान में है वो मेरी पूजा नहीं करेंगे. And in this way, they fail to recognize that I am not different from the Supreme Personality of Godhead. तो उस कारण वो उस अज्ञान के कारण वो ये समझ नहीं पाएंगे कि मैं साक्षात भगवान हूँ. ये किंग वेन कह रहे, राजा वेन कह रहे हैं. And because of this negligence to worship me, they will not be happy in this life, in this kingdom. And even their next life, happiness is not guaranteed. तो अगर आप इस बात को ध्यान नहीं देते हो कि मैं ही साक्षात भगवान हूँ, तो आप ना तो इस जगत में, इस राज्य में सुखी रहोगे, ना अगले लोक में सुखी रहोगे. You know, there was a in the Mukta Charita, there was this conversation in the Pearl's Leela of Lord Krishna. There was this conversation that was going on between the gopis and Radharani on one side, and Krishna and the cowherd boss on one side. And there was this argument that the gopis said Radha is the queen of Vrindavan. And the Gopals, they said that Krishna is the king of Vrindavan. तो एक ग्रंथ है रघुनाथ दास गोस्वामी का मुक्त चरित, तो उसमें वर्णन आता है, एक बार एक लीला आती है कि कृष्ण और उनके गोप सखा साथ होते हैं और एक तरफ होते हैं राधा रानी और उनकी गोपियाँ. तो गोपियाँ कहती हैं कि राधा रानी जो है वृंदावनेश्वरी हैं. तो यहाँ पे गोप कहते हैं, राधा रानी की सखियाँ कहती हैं कि राधा रानी वृंदावन की रानी है. और यहाँ पे कृष्ण के ग्वाल बाल सखा कहते हैं कृष्ण वृंदावन के राजा हैं. And when Lord Krishna started to establish himself as the king of Vrindavan, you know what Radha did? She said, Tista, stop, shut up there. You are LIKE Chandra, you are false king. तो जैसे कृष्ण अपना वर्णन करने लगते हैं कि मैं कैसे वृंदावन का राजा हूँ, तो राधा रानी बोलते चुप हो जाओ, तुम एक झूठे राजा हो. So, I'm just remembering that conversation when this unqualified so-called king is claiming that, he's Raja Rishi and the citizens should worship him. तो ये वही उसी तरह झूठा राजा ये बोल रहा है कि मैं राजर्षि हूँ और अपने नागरिकों को बोल रहा है कि तुम मेरी पूजा करो. So, the description of Radharani regarding LIKE Chandra best fits Vena. ये वो वर्णन यहाँ पे फिट होता है. He's a false king. ये झूठा राजा है, वो राधा रानी का वर्णन यहाँ पे फिट बैठता है. This is what people do when they want to cheat the public. If even they are not qualified, they quote the scriptures to give the attributes of those who are qualified to man that position, and they say these are all documented in the Shastra. And you just need to see me as the right person and pay obeisances to me, worship me, think about me. They're claiming Krishna, right? तो जो कोई अयोग्य व्यक्ति अगर किसी को धोखा देना चाहता है तो शास्त्रों का सहारा लेता है और कहता है कि शास्त्रों में ये सारी चीजें वर्णित है योग्य व्यक्तियों के लिए, तो देखो जो योग्य व्यक्तियों के लिए वर्णित है शास्त्रों में वो मैं हूँ यहाँ पे. तो ऐसे करके वो धोखा देता है. So, we also find similar cases, similar scenarios in other parts of the Bhagavatam, where we find that, Kadama Muni, the interactions, the marriage between Kadama Muni was such an excellent, model for all Vaishnavas and Vaishnavis. And sometimes it so happens that devotees make a reference to Devahuti's submissiveness, the service orientation to her husband, and they make a reference to that. Just see how
devotee was serving the husband like a menial servant. तो ऐसा ही शास्त्रों का हम दुरुपयोग करते हैं। तो एक घटना वर्णन आती है तीसरे स्कंद के भागवतम में, जहाँ पे देवहूति और कर्दम मुनि के बारे में वर्णन आता है। तो कई लोग उसको कोट करते हैं, उसको दिखाते हैं कि देखो कि एक पत्नी कैसे अपने पति की सेवा कर रही है, बिल्कुल दास भाव में रह के। So the question that may arise is, like Vena is saying, I am this, if you don't worship me, then you are in ignorance, and, you're not going to be happy in this life, in the next life also you're not So when we make reference to great personalities, we are actually making an equation with those great personalities. So like in the case of 𝒂𝒚𝒔, we make a reference that, look, okay, so I have a wife, and I tell my wife, don't you see how, just see, read the Bhagavatam, you see how devotee was serving the husband like a menial servant. She didn't even care for herself. So the question that may arise is, have I become a 𝒂𝒚𝒔? तो इसी तरह कई लोग तुलना करने लगते हैं कि को अपनी पत्नी को बताते हैं कि देखो देवहूति ने अपने पति की कैसी सेवा की थी, बिल्कुल दासी की तरह सेवा की थी, और यहाँ तक कि अपना ध्यान भी नहीं रखती। तो इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि अगर ऐसी तुलना करते हो तो क्या आप कर्दम मुनि के जैसे हो गए हो, जो आप देवहूति जैसी पत्नी को इच्छा करते हो? So we find this Bhagavatam is mainly a dialogical treatise. Dialogical means two people are discussing. तो ये जो भागवतम है दो लोगों के बीच में वाद प्रतिवाद, या कह सकते हैं कि संवाद के ये तेरे संवाद है एक तरह से दो लोगों के बीच में। And here Maitreya Muni is narrating this a story of Vena to Vidura. यहाँ पे कि संवाद चल रहा है मैत्रेय मुनि में और विदुर जी में। जो मैत्रेय मुनि हैं विदुर जी को राजा वेन की कथा सुना रहे हैं। So there is always some questions and answers. Our system follows that of a speaker and an audience, and the speaker does not just speak and goes away. You have to face the music, you have to face the smoke, you have to face question and answers based on what you said. Yes. तो ये भागवतम की शैली ऐसी है, प्रश्न करता है एक उत्तर देता है। तो इसी तरह ये जो स्पीकर है भागवतम पे, वो कथा तभी पूर्ण होगी जब प्रश्न उत्तर हो। So we also find King Parishit was receiving this Bhagavatam from 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒕 Goswami. Again, 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒕 Goswami, but there was a big crowd. Not only King Parishit was there. The king, they have entourage. So when the king was to pass away, he came by the bank of the river with all of his entourage, and so many sages also were there because the king is going to be leaving his body. So all the people, they came, and 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒕 Goswami was speaking. तो इसी तरह भागवतम का प्रारंभ जैसे परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाते हैं 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒕 गोस्वामी, तो सारा राज्य त्याग दिया था परीक्षित महाराज ने और गंगा नदी के किनारे आ गए थे। क्योंकि उनको कुछ ही दिनों में शरीर त्यागना था। तो सारे विश्व भर से बड़े बड़े जो महर्षि हैं वो आए थे और 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒕 गोस्वामी भी आए थे। तो 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒕 गोस्वामी राजा परीक्षित को वो भागवतम सुनाते हैं। So in this context, Vena is speaking to the citizens, and so he's saying that, he's like persuading the citizens to worship him. He's assuming the position of a Raja Rishi, whereas he is the rascal number one. तो इसी तरह वेन भी अपने नागरिकों के ऊपर जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि तुम मेरी पूजा करो राजर्षि के रूप में। बट वो राजर्षि नहीं थे, वो एक नंबर के धूर्त थे। The King Vena's activities became so dissatisfactory to the sages
that at some point in time they decided to kill him. तो राजा वेन का जो व्यवहार था वो इतना संतोषजनक हो गया था वहाँ के साधुओं के लिए, तो एक समय ऐसा आया कि उनको उनकी हत्या करनी पड़ी. So the question may arise, how could sages who are considered Shema Dakshinaha, they are favorably disposed to the society in general, they want to see people happy, how could they decide to kill a king? तो प्रश्न ये उठता है कि राजा सॉरी साधु वो सब समदर्शी होते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने उस राजा की हत्या कर दी. King Vena acted beyond his boundaries. तो राजा वेन ने अपनी मर्यादाओं को तोड़ के उसके बाहर कार्य किया था. When people act beyond their boundaries, it always invokes dissatisfaction from the community. तो कोई व्यक्ति अगर मर्यादाओं के बाहर कार्य करता है तो ये समाज में असंतुष्टि को ही लाता है. So here text 25 he says Koyagya purso nama yatra vo bhakti disi bhatri sneha vidru ranam yata jare kuyositam. You are so much devoted to the demigods. But who are they? Indeed, your affection for these demigods is exactly like the affection of an unchaste woman who neglects her married life and gives all attention to her paramour. तो हिंदी में अगले श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है, तुम लोग देवताओं के इतने भक्त हो, किंतु वे हैं कौन? निसंदेह इन देवताओं के प्रति तुम लोगों का स्नेह उस उल्टा स्त्री जैसा है जो अपने विवाहित जीवन की उपेक्षा करके अपने यार पुरुष पर सारा ध्यान केंद्रित कर देती है. So he's assuming the position of Krishna. Krishna condemned the worship of the demigods in the Bhagavad Gita. Okay, so here King Vena, a sinful king, he's speaking exactly the way Krishna spoke. तो ये वेन इतना धूर्त था कि जैसे भगवद गीता में कृष्ण भगवान बोलते हैं उसी प्रकार बोल रहा था. So again, it's to be understood that people can use the scripture for their own advantage, not for the purpose of fulfilling the objective of the scriptures. तो ये यहाँ समझने वाला है कि कई बार लोग शास्त्रों का गलत इस्तेमाल करते हैं अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, ना कि जो शास्त्रों का वास्तविक उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए. Text 26 to 27. Vishnu Vironcho Girisa Indro Vayu Yamoravi Pajanyo Dana Da Somaha Shiti Agni Apampati Ete Chanye Chavi Buddha Prabhavo Varasa Payo Dehe Bhavanti Ripate Sarva Deva Mayo Ripaha. Translation. Lord Vishnu, Lord Brahma, Lord Shiva, Lord Indra, Vayu, the master of air, Yama, the superintendent of death, the Sangha, the director of rainfall, Kuvera, the treasurer, the moon god, the predominating deity of the earth, Agni, the fire god, Varuna, the lord of waters, and all others who are great and competent to bestow benediction or to curse, all abide in the body of the king. For this reason, the king is known as the reservoir of all demigods, who are simply parts and parcels of the king's truth. हिंदी महाराज. भगवान श्री विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वायु, यम, सूर्यदेव, परजन्य, कुबेर, चंद्रदेव, पृथ्वी देवी, अग्निदेव, वरुण
तथा अन्य बड़े बड़े देवता जो आशीर्वाद या श्राप देने सकने में समर्थ हैं, वे सब राजा के शरीर में निवास करते हैं। इसलिए राजा सभी देवताओं का आगार माना जाता है। देवता राजा के शरीर के अंश मात्र हैं। See, it is true, but this is a reality, this is a fact. But is Vena the rightful king? No. तो यहाँ पे सही बोल रहे हैं वेन, बिल्कुल ही शास्त्रों की बात है। परंतु क्या वेन इस राज्य पद के योग्य हैं? Purport by Srila Prabhupada. There are many demons who think of themselves as the supreme and present themselves as the directors of the sun, moon, and other planets. This is all due to false pride. Similarly, King Vena, okay, I mentioned this. Similarly, King Vena developed the demoniac mentality and presented himself as the supreme personality of God. Such demons are numerous in this age of Kali, and all of them are condemned by great sages and saintly persons. तो हिंदी में तात्पर्य इस प्रकार है, ऐसे अनेक असुर हैं जो अपने आप को परम शक्तिमान मानते हुए अपने को सूर्य, चंद्र तथा अन्य ग्रहों का स्वामी बताते हैं। यह मिथ्या अहंकार के कारण है। इसी प्रकार राजा वेन में आसुरी प्रवृत्ति आ गई थी और वह अपने आप को भगवान मानने लगा था। इस कलयुग में ऐसे असुरों की भरमार है, किंतु ऋषि मुनियों द्वारा इन सब की भर्त्सना की जाती है। So again, he calls for a warning. Prabhupada mentioned the purport. In this Kali Yuga, many people will parade themselves as the Supreme Personality of Godhead. And even in Dwapara Yuga, people were parading themselves as the Supreme Personality of Godhead. Yeah. तो सतयुग में भी ऐसे लोग थे, द्वापर में भी, त्रेता में भी ऐसे लोग हैं जो अपने आप को भगवान बताते हैं। Dwapara Yuga, when Krishna was on this planet, the number of the kings, I know the case of Pondraka, he even sent a message to Krishna that, hey, give up your disc. These are all my symbols. What is this? तो द्वापर में वर्णन आता है पौंड्रक का। पौंड्रक भगवान कृष्ण के पास संदेश देता है कि तुमने सारे चक्र, शंख चक्र, गदा पद्म क्यों धारण कर रखे हैं? तो वे मेरे अस्त्र शस्त्र हैं, दे दो वापस इनको। Hiranyakashipu wanted to be worshipped as the Supreme Personality of God. हिरण्यकशिपु अपनी पूजा करवाना चाहते थे भगवान के रूप में। So, if someone is given some power, if someone has some power and he is sober or she is sober, we know that that person is not an ordinary person. तो अगर किसी व्यक्ति के पास कोई शक्ति आती है, कोई पद आता है, लेकिन फिर भी विनम्र है, तो इसलिए इससे हमें ये समझना चाहिए कि वो साधारण व्यक्ति नहीं है। Because power matters. Because power intoxicates. क्योंकि ये शक्ति महत्व रखती है। क्यों? कोई भी पद या शक्ति किसी को मतवाला बना सकती है। So we see that in King Vena's case. तो हम ये राजा वेन के के वर्णन में देखते हैं। Maybe we should stop there and take some questions. Yeah. Any comments or questions? So महाराज कह रहे हैं, तो आप लोग कृपया करके प्रश्न पूछिए कुछ। We should be very careful in Kali Yuga. I remember when we joined, my Guru Maharaj, Bhakti Swami, he would always emphasize, read Prabhupada's books. Read Prabhupada's books in the public. He would emphasize, read Prabhupada's books. The reason he gave was so that you don't get cheated by anybody. तो महाराज बता रहे हैं कि मेरे गुरु महाराज परम पूज्य श्री भक्ति तीर्थ महाराज, तो कहते थे अपने व्याख्यानों में, पूरे सब सभा के बीच में कहते थे कि प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ो, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ो। उसका कारण बताते हैं कि ताकि आपके साथ कोई धोखा ना हो। These days, I've been traveling since November last year. I was in Bangladesh, then I went to the UK, I was in London, then to Manchester, then I went to Switzerland, and I went back to America traveling in the East Coast. And most of the places I've been to, since November last year, I found that many devotees
are too busy. They don't read Prabhupada's books. तो महाराज बता रहे हैं कि मैं बांग्लादेश गया, फिर वहाँ से लंदन गया, वहाँ से मैसाचुसेट्स गया, वहाँ से ईस्ट कोस्ट गया और वहाँ से अलग अलग जगहों पे गया। तो वहाँ पे मैंने एक ही चीज़ देखी कि लोग भक्त लोग बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं, वो प्रभुपाद की बुक्स ही नहीं पढ़ते, प्रभुपाद जी ग्रंथों का अध्ययन ही नहीं करते। So if you're not reading the books, if you're not reading Prabhupada's books, and you're not also listening to Prabhupada's teachings, there are practically, if even you're busy, you can't come to classes or you can't listen to classes during the period that the classes are being held. All these books are now in audio format. Bhagavad Gita is in audio format, Bhagavatam is in audio format, Chaitanya Charitamrita is audio format, Chaitanya Bhagavad, there is audio format. Please find time, give some quality time to associate with the Vedic instructions. तो अगर आपके पास कोई कह सकता है समय नहीं रहता, मेरे क्लास में आने के लिए भी समय नहीं रहता, तो कई सारी बुक्स हैं, प्रभुपाद जी की सारी बुक्स हैं, भागवतम है, भगवद गीता है, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत है, तो ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध है, तो आप उसका सहारा ले सकते हैं, उनकी सहायता ले सकते हैं। तो कुछ मूल्यवान समय आप इनको दीजिए, इन निर्देशों को समझने में, आदेशों को, शास्त्रीय आदेशों को समझने में दीजिए। And I must register my happiness with those of you who are doing your Bhakti by Baba cause, because it's so important for us to become preachers. We need to understand the philosophy. We need to systematically study Prabhupada's books. तो मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ उनका जो भक्ति वैभव का कोर्स कर रहे हैं, कक्षा में है भक्ति वैभव, क्योंकि बहुत जरूरी है कि अगर किसी को प्रचारक बनना है तो प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को क्रमशः समझना बहुत ही आवश्यक है। Look at how knowledge can protect you. Even during the period of Rupa Goswami and the Rupa and the six Goswamis, those days sages were highly respected, but knowledge protects you, because even Rupa made a statement that a woman opposed him. You know that story? Rupa Goswami, he made a statement that was Mirabai. Papa told this story. Mirabai was in Vrindavan. Talking about why we need to read the scriptures, understand the philosophy. So Mirabai was in Vrindavan, and she wanted to have a darshan of Rupa Goswami. And Rupa Goswami responded that, I am a Swami. I don't give darshan to women. Then Mirabai responded that, I thought we are all Prakriti, that Krishna is the only Purusa. How is it that you have become Purusa? तो महाराज बता रहे हैं कि अब सिर्फ अभी के समय नहीं, रूप गोस्वामी के समय में, षड गोस्वामी के समय में भी शास्त्रों को पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। तो एक घटना बता रहे हैं कि कैसे ज्ञान आपकी रक्षा करता है। तो एक बार मीराबाई श्री रूप गोस्वामी से मिलने आती है वृंदावन में, तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि मैं तो पुरुष हूँ, या मैं स्वामी महाराज या स्वामी मैं पुरुष हूँ, तो मैं स्त्री से कैसे मिल सकता हूँ। तो मीराबाई जब ये सुनती है तो कहती है कि अच्छा, मैंने तो सुना था कि सिर्फ वृंदावन में एक ही पुरुष है, कृष्ण है, तो दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया, चलो उसको देखते हैं। तो ये सुना ऋषि रूप गोस्वामी ने। And imagine if you are the president of this temple and then you gave an instruction out and then a woman comes to challenge you. How will you feel? If even the temple commander, okay, a woman, one Mataji comes to challenge you. तो अगर मंदिर के अध्यक्ष हैं या टेंपल कमांडर हैं कोई, तो वो कोई निर्देश देते हैं और स्त्री एक माता जी आके उस निर्देश को चुनौती देती है, तो कैसा लगेगा। But listen to Rupa Goswami's response when he was challenged, but with the reality, with the shastric evidence. He said, yes,
you are correct. Come and have your darshan. तो हालांकि वो चुनौती थी, लेकिन वो शास्त्रों पे आधारित थी। अगर तो रूप गोस्वामी ने बोला कि हाँ तुम सही कह रही हो, तुम आओ मिल सकती हो मुझसे। If we don't read the books, people like Vena, they are patrolling on this planet. Like, great rulers, great kings, great saintly persons. If you don't read the books, you become susceptible, become vulnerable to cheats. तो अगर हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन नहीं करते, तो बहुत संभावना है कि हमारे साथ धोखा होगा। कई सारे ऐसे वेन हैं जो बाहर घूम रहे हैं इस संसार में। Again, another example of how knowledge can save you from being cheated by anybody. One devotee was out on Sankirtan. This was in Africa. When I was in Africa, I was told this story. This devotee was out on Sankirtan, and then some mystical person came to him that, oh, I am Krishna's incarnation. Then he said he's Krishna's incarnation. So ये बात अफ्रीका की है कि कैसे ज्ञान आपकी रक्षा करता है। तो एक बार एक अफ्रीकी डिवोटी वो संकीर्तन में निकले और वहां पे अफ्रीका में कोई व्यक्ति मिला उनसे और बोलता है कि अरे मैं तो कृष्ण का अवतार हूँ। So this devotee said, oh, very good. तो भक्त ने बोला बहुत अच्छा। Can you show me a universal form? तो क्या आप मुझे अपना विराट रूप दिखा सकते हैं? So this false Alika Krishna was defeated. तो ये जो मिथ्या कृष्ण है वो उनकी पराजय हुई। He couldn't show his universal form, and the devotees told him, get out from here. तो वो अपना विराट रूप नहीं दिखा सके और भक्त ने बोला भाग जाओ यहाँ से। Any comments or questions? प्रश्न कोई? Hare Krishna Maharaj, Dandvat Pranam. Thanks a lot for this wonderful lecture. And Maharaj, my question was that nowadays we see a lot of people, even in Vrindavan, we see a lot of people who seem to be saintly, so who seem to be on the platform of a righteous king, but some devotees advocate that no, they are not actually saintly persons, but some devotees do advocate that yes, they are saintly persons. And we also see by our own perception that this person's behavior is not that of a saintly person, but still so many people are worshipping him, and a lot of people, saintly persons in Vrindavan, they are being worshipped with tulsi. So how should we, Maharaj, understand that this person is a saintly person and this person is not? Yeah. Yes, bolo. Okay, translate. तो मेरा प्रश्न ये है कि आजकल हम वृंदावन में देखते हैं कि पूरी दुनिया में देखते हैं, स्पेशली वृंदावन में, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साधु के लेवल पर या राजा के लेवल पर हमें दिखाई देते हैं, लेकिन कई भक्त बोलते हैं कि हाँ वो राजा के लेवल पर हैं, और कई बोलते हैं कि नहीं वो साधु के लेवल पर या राजा के लेवल पर नहीं है। तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति सही में साधु है? So, thank you very much. Nice inquiry. Very nice, really relevant question. तो धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है ये। Now, we should not be judgmental. We should not be so much concerned about others. We should have the knowledge from Prabhupada's books and protect ourselves from being cheated. तो हमें किसी के प्रति पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए। तो हमें प्रभुपाद की पुस्तकों का सहारा लेना चाहिए और अपने आप को अज्ञानता से बचाना चाहिए। We don't know who is who, so to avoid being offensive to someone, be a chaste devotee. Be chaste to Prabhupada's movement. Be chaste to Prabhupada's teachings. Be chaste to the Gaudiya Vaishnava literatures. तो आप अपराध करने से बचिए और साथ ही प्रभुपाद जी के आंदोलन के प्रति, प्रभुपाद जी की पुस्तकों के प्रति, प्रभुपाद जी के वाणी के प्रति, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के प्रति, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रति अपनी निष्ठा को बना के रखें। And we should take guidance from a bona fide spiritual master. और साथ ही साथ निर्देश लेते रहिए एक प्रामाणिक गुरु के। And
when we have the opportunity to be guided by somebody that when we are in a confusion, we can approach them and say, Maharaj, I heard like this, I'm experiencing this, I'm having this problem. Please enlighten me. तो ये सुविधा है यहाँ पे कि आप जो किसी को समस्या हो तो आप किसी सन्यासी को, महाराज को, किसी भक्त को, भक्त के पास जा सकते हो और कह सकते हो कि ये यहाँ पे लिखा है, मेरे को ये समस्या हो रही है, ऐसा बोला है पर मेरे को ऐसा लग रहा है, तो इसका क्या समाधान है. And Lord, in the Bhagavad Gita, Lord Krishna mentions Tadvidi pranipatena paripasnena sevaya upadeshyanti te jnana jnanina tattva darshan. Approach means what? The person is, if someone is, say, has gone to the spiritual world or someone has passed away, can you approach? तो जाओ उसके पास. तो जाओ का मतलब क्या है? कोई आध्यात्मिक जगत में है, किसी ने शरीर छोड़ दिया है, तो कैसे जाओगे उसके पास? Because I'm raising that issue because sometimes the argument is that no, Prabhupada is the only guru. तो कई बार एक तर्क आता है हमारे सामने कि प्रभुपाद ही एकमात्र गुरु है. Prabhupada is the founder acharya and is still the grand guru of our movement. प्रभुपाद जी संस्थापक आचार्य हैं और परम गुरु हैं इस आंदोलन के. And in every organization, okay, forget about spiritual stuff. Say, if you go to any university at the Faculty of Management, the professor who founded that Faculty of Management had a vision statement, has a mission, and goals. Is placed on the auditorium or the reception of that faculty, so that any other professor who becomes the dean of the faculty will simply follow that mission statement, the goals, and the vision. It becomes like a parampara. तो आध्यात्मिक आंदोलन की बात छोड़ दे, किसी भौतिक आप विश्वविद्यालयों में जाते हैं तो वहाँ प्रबंधक के ऑफिस में या कहीं कार्यशाला में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि जो वहाँ का संस्थापक होता है वहाँ उसका विजन या कि उसका जो उसका ध्येय है और उसका मिशन, लक्ष्य उसका और गोल, लक्ष्य है, तो वो सब चीज़ें अलग अलग करके लिखी होती है. तो अगला व्यक्ति जो मुख्य प्रबंधक के रूप में आता है तो वो भी उसको उसी तरह फॉलो करता है, उसी को ग्रहण करता है. तो एक तरह से एक परंपरा बन जाती है. It doesn't mean that when the founder of that faculty of management, leaves the planet, there will be no any other dean of faculty. Deans of faculty will always be there. What happens? They will just follow the mission, the goal, and the vision of the founder of that faculty. तो ऐसा नहीं है कि अगर जो मुख्य जो संचालक है वहाँ के उस विश्वविद्यालय के वो शरीर छोड़ देते हैं तो आगे कोई संचालक आएगा ही नहीं. वो आते रहेंगे, बस उनका लक्ष्य क्या सेम लक्ष्य हो गया, उनका दृष्टि जो ध्येय है वो सब एक ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा. Similarly, when Prabhupada founded this International Society for Krishna Consciousness in New York, he crafted his mission statement, his vision and goals, and he expected that his followers or those who come to lead the society, the future gurus, have to simply follow his vision, his mission and goals. तो इसी तरह श्रील प्रभुपाद जी ने जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की तो वहाँ उसमें भी उन्होंने अपना ध्येय, अपना लक्ष्य, जो भी उनका जो लक्ष्य था वो रखा और उनकी अपेक्षा थी कि जितने भी अनुयायी होंगे इस आंदोलन में तो वो सब इस लक्ष्य को ध्यान में रख के ही आगे कार्य करेंगे. In that way, the spirit of Prabhupada, his teachings, his mission, goals and vision are sustained. तो इस तरीके से प्रभुपाद जी का जो शिक्षाएं हैं, उनका जो मिशन है, उनका जो ध्येय है वो सब सुरक्षित रहेगा.
So when people make the argument that, and that argument does not hold in academia, because in academia, all faculties are founded, even universities are founded by one person. And when they leave, another person becomes the president. Another person becomes the president. It's like that. So, जो कोई ये जो तर्क है, ये कोई इसमें वजन नहीं है इस तर्क में. क्यों? क्योंकि जैसे ही आप किसी भौतिक प्रतिष्ठानों में भी देखते हो, तो कोई संस्थापक रहता है, उसकी स्थापना करता है, उसके बाद वो चला जाता है, तो संस्थापक दूसरा चेंज होता है, या उसके जो मुख्य प्रबंधक है वो बदलता है. And therefore, when Krishna says in the Gita, 𝒍𝒐 approach, we see the relationship between Krishna and Arjuna. It was a face-to-face interaction, not by emails. तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं तद विद्धि प्रणिपाते हैं परिप्रश्न सेवा. तो उसका उदाहरण भगवद गीता में ही है, कृष्ण और अर्जुन. तो साक्षात वो दोनों एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, किसी ईमेल या व्हाट्सएप के द्वारा नहीं. Narada Muni would travel to different places to meet his disciples. नारद मुनि अलग-अलग जगह पे भ्रमण करते थे अपने शिष्यों से मिलने के लिए. Why? Because the interaction of or association with a saintly person can give us amazing benefits. क्यों? क्योंकि जो साधु पुरुष का संग है हमें आश्चर्यजनक हमको लाभ देता है. And therefore we need some guidance so that we don't get confused, and so that we don't also go and kill our spiritual life by seeing somebody and then we take it as our duty to criticize the person. Oh, you're just a cheat, you're not a sadhu, you just do. That's not our job. तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हमें किसी को देख लिया ये ऐसा नहीं तो उसकी आलोचना करने लगते हैं, उसकी निंदा करने लगते हैं. तो ये हमारे कार्य नहीं है, इससे बचना चाहिए. And sometimes people go to Vrindavan. I know of some people or somebody at least who was initiated in ISKCON. He goes to Vrindavan. He stays in Vrindavan with his wife, young people, with his wife for some time. And he crowned himself a guru. So he broke away from ISKCON. He broke up from ISKCON. He made himself, he became a guru. He took shelter of some Babaji there and he became a guru. So महाराज बता रहे हैं वृंदावन में तो वो एक व्यक्ति थे, वो रहते थे ISKCON में ही. वो किसी कारण से उन्होंने ISKCON छोड़ दिया और वहाँ पे बाबा जी की शरण ले ली और खुद ही वो गुरु बन गए. So going to Vrindavan or going to the dam just by yourself, it could also create some problems. तो धाम जाने में, वृंदावन जाने में भी वो हो सकता है कोई समस्या पैदा कर दे वहाँ पे. And especially when we stay on the dam and then we commit some offenses, it could also create a problem. वहाँ धाम में जाते हैं फिर अपराध करते हैं तो वो इससे भी समस्या होती है. So we need to be careful. We should protect our devotional creeper. तो मैं सावधान रहना चाहिए, अपने भक्ति लता बीज को बचा के रखना है. Yes, any other comments or questions? Yes. Hare Krishna Maharaji, thank you for the wonderful lecture. My question is that in India we see there are various festivals which are directly dedicated or related to demigods. So as a Krishna devotee we should celebrate them or not, and if we should celebrate them then how we should celebrate? Translate. मेरा प्रश्न ये है कि हम भारत में हम बहुत सारे त्यौहार ऐसे दिखते हैं जो कि देवी देवताओं को पूरी तरीके से रिलेटेड होते हैं. तो कृष्ण के भक्त होने के नाते हमें उन त्योहारों को मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? Okay, thank you very much for that insightful question. तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये इतने गहरे प्रश्न के लिए. Now Krishna said that we should not worship the demigods. कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमें देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए. For the devotees. भक्तों के लिए. But we should not also misunderstand. Krishna also he mentioned again also in the Bhagavad Gita that everyone is on his path. Even तो the कृष्ण ये भी worship of the कहते हैं, demigods. कृष्ण भी कहते हैं कि हर कोई अपने रास्ते पे और कुछ लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं. The thing is that
if you have a relationship with the President of India or the Prime Minister of India, why go through a secretary? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके अगर प्रधानमंत्री से या राष्ट्रपति से सीधे संबंध है तो उसके सचिव के थ्रू के माध्यम से क्यों जाओगे, सीधा उससे मिलोगे प्रधानमंत्री से. Secretary may create some bureaucracy because they want to show you that, hey, I'm in charge. Okay, do like this before you see me. कई बार वो सचिव हो सकता है कुछ राजनीति करने का प्रयास करे, बोले कि मैं ही नियंत्रित कर रहा हूँ कि मेरे थ्रू ही जाओगे आप. And some people also argue that, I was in Michigan when I went back to the US. I was traveling, and when I went to Michigan, one devotee told me a story how one big building opposite of their temple is full of young Indian professionals. And some of them, they will preach to them, and then they say that, no, I cannot come to your temple. Why? Because if you put Krishna's photo in your house, then your house becomes battlefront, Kurukshetra. तो महाराज बता रहे हैं तो अफ्रीका में वो थे, वहाँ अफ्रीका से यूएस गए तो दोबारा आए तो वहाँ के लोगों ने बताया कि हमारे मंदिर के बगल में एक बिल्डिंग है, कुछ भारतीय लोग वहाँ पे रहते हैं. तो जब उनको बोला गया कि आप मंदिर आइए, कह रहे नहीं हम मंदिर नहीं आ सकते. क्यों? क्योंकि अगर आप भगवान कृष्ण की तस्वीर अपने घर पे रखोगे तो आपका जो घर है वो युद्ध क्षेत्र बन जाएगा, कुरुक्षेत्र बन जाएगा. So some of them, they will prefer to worship the demigods, okay, for quick fix. तो वो किसलिए वो देवी देवताओं की पूजा करते ताकि तुरंत कह सकते तुरंत का उनको समाधान चाहिए. You see, when people have some challenges and they think because they are in devotional service, why? Because that's why they have any challenges. My advice to them is, okay, stop chanting, stop coming to the temple for 1 month and see whether your problems reduce or they increase. तो किसी को लग सकता है कि भाई जब से मैं भक्ति में आया हूँ तब से ही मेरे साथ समस्या शुरू हुई है, तो मेरा उनका सुझाव है कि आप 1 महीने के लिए माला बंद कर दीजिए, मंदिर आना बंद कर दीजिए, फिर आप देखिए 1 महीने के बाद आपकी समस्याएं कम होती है या बढ़ती है. And therefore, we should not get into this system of doing something else. If even we are not doing pure devotional service, we should do the sadhana in such a way that we don't get distracted to other forms of, alignments. Because focusing on Krishna helps with the purification. Focusing on the devatas and facilitates our rebirth in the material world. तो अगर आप कृष्ण के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका शुद्धिकरण होगा, लेकिन अब देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हो सकता है आपका भौतिक जगत में अस्तित्व और ज्यादा समय के लिए रह जाए. But devotees should not disrespect people who are worshiping the demigods. Devotees should not disrespect even the demigods. तो भक्तों को सावधान रहना चाहिए कि उनका अनादर न करें, देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं, और देवी देवताओं का भी अनादर न करें. Krishna mentioned that those who have many material desires, that those who align with the worship of the devatas. But that is also not something we should repeat to people who are worshiping demigods, because if you want people to come to your fold, you don't attack them. You don't tell them, we may say, well, I'm just repeating what Krishna says in the Bhagavad Gita. तो अगर कोई देवी देवता की पूजा कर रहा है तो आपको अगर उनको कृष्ण की भक्ति में लेके आना है तो बार बार आप उनको ऐसे करके उनके ऊपर प्रत्यारोप नहीं लगा सकते कि भाई तुम देवी देवता की उपासना कर रहे हो और आप कहोगे कि भाई भगवान कृष्ण भी यही बोलते तो मैं भी यही बोल रहा हूँ लोगों को. The intelligent people, for instance, if they have a priest who is doing Satyanarayan Puja for them, and they hear the Satyanarayan Katha, and in some of the Satyanarayan Kathas, you find cases where a story of Indra comes that
Indra did something to somebody or committed some crime or did something antisocial, and the intelligent person will think, that is a planet I want to go? There are still crimes there? No. तो महाराज बता रहे हैं कि जैसे सत्यनारायण पूजा होती है, सत्यनारायण कथा होती है, तो उसमें एक कहानी आती है कि इंद्र कोई अपराध कर देते हैं तो उनको दंड मिलता है। तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो जैसे इसको सुनेगा वो सोचेगा कि अरे अपराध स्वर्गलोक में, वहां मैं जाना चाहता हूं तो वहां पे भी अपराध है, तो मैं क्यों जाऊंगा उस जगह। So in that way, intelligent people are brought out of their enclaves of dedication and attachment to the worship of the devatas, and they come out of that dense enclave into the light of the worship of Lord Krishna. तो इसलिए बुद्धिमान मनुष्य जो है वो जो देवी देवताओं की उपासनाओं के घने जंगल में जो है तो उस जंगल से बाहर निकल के उस प्रकाश में आएगा। किस प्रकाश में? जहाँ वो कृष्ण की पूजा कर सके, कृष्ण की सेवा कर सकेगा। So we have to be tactful. The word is tactfulness. We have to be tactful. The way we're dealing with people, the way we talk, we should act in such a way that we don't hurt people unnecessarily, just because we are devotees or we are trying to be devotees. इसलिए हमें थोड़ा बुद्धिमान होना पड़ेगा कि अनावश्यक रूप से उनको कष्ट नहीं देना पड़ेगा, कष्ट नहीं देना चाहिए कि क्योंकि आप कृष्ण के भक्त हो, देवी देवताओं के भक्त हैं। तो Any other comments? Last comment or question? We have some time, so we can take more questions. Which time? Look. We're going to stop at 9:30, whether I like it or not. Okay? All right, so any comments, any other comments or questions? No, Mataji, all the men have been taking the questions. Hare Krishna Maharaji, please accept my humble obeisances. Dhanavad. Thank you very much for your very enlightening class today. Maharaji, my question, I actually have two questions if you permit. But the first one is, we were reading the first canto, 18th chapter, I think 29 shloka. In that purport, Srila Prabhupada expounds a principle from the Shastras that even if the king commits some mistake, he is never to be considered a wrongdoer. So although we can understand that has to be for a saintly king or a Raj Rishi, still how can we understand that? Yeah. Can you translate that? हरे कृष्णा महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत सुंदर आपने लेक्चर दिया हमें। तो मेरा प्रश्न है, जो एक राजा की क्वालिटीज़ डिस्कस हो रही थी उससे रिलेट करके कि पहले स्कंद में 18वें अध्याय में 29वें श्लोक में प्रभुपाद जी एक कथन कहते हैं कि यदि राजा कोई गलती भी करता है तो उसे गलत नहीं समझना चाहिए, गलत नहीं मानना चाहिए। तो उसको आज के संदर्भ में हम कैसे समझ सकते हैं? हरे कृष्ण। So thank you very much for that question. तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रश्न के लिए। In Gita also Lord Krishna says that a devotee may falter, but it should be considered saintly if he's on the path. तो गीता में भी कहा जाता है कोई व्यक्ति कोई दोषी है, कोई अपराधी है, लेकिन फिर भी अगर भक्ति के पद पे दृढ़ है तो उसको साधु मानना चाहिए। So in a similarly, like making a reference to Prabhupada's statement in the purport, here that the king is a devotee, Raja Rishi means he is a devotee, not Vena. तो वो जो वर्णन है वो किंग राजर्षि यानी कि भक्त है, वेन के बारे में नहीं। They are the embodiment of saintliness and administrative warriorship. तो वो एक तरह से प्रतिरूप है, प्रतिमूर्ति है किसकी? साधुत्व की, और दूसरा जो कोई शासक है, शासन की प्रतिमूर्ति है। And so the human beings, so in the process of discharging their duties, if there is some perception of some defects, we should not take that seriously.
तो अगर कोई दोष हमें दिखे भी उसमें तो उसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए. They will rectify themselves because they are only part of devotion and saintly administration. क्यों उनसे गंभीरता से क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि वो अपने आप वो उसको शोधित कर लेंगे क्योंकि उस भक्ति के पथ पे हैं. So we can also do that, bring that home and through our families, that if we are practicing or we are trying to practice Krishna consciousness and someone falters in the home, we should have a better sense of understanding and try to see that this person is trying to practice Krishna consciousness, and now he or she has this type of defect, but that defect will be rectified in due course of time. So far, they are on the path of devotional practice. तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जैसे इसको हम परिवार पे भी हम लागू कर सकते हैं. कोई परिवार में भक्ति कर रहे हैं लेकिन कोई व्यक्ति है जो भक्ति नहीं कर रहा सही से, कोई दोषी हो या अपराधी हो किसी चीज़ का, तो उसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए. क्योंकि अगर भक्ति के पथ पे लगा हुआ है तो क्रमशः वो उससे शुद्ध हो जाएगा. And sometimes the activities of the great souls can be confusing to the ordinary persons. So I remember there was an incident in Bhagavatam when 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒕 saw Lord Shiva in an rapture with his wife, and then he was just laughing. He thought, "Come on, this is not expected of him, you know." तो ऐसी एक कथा मतलब कई बार ये भी हो सकता है कि हम महान पुरुषों को साधारण समझें अपनी भौतिक दृष्टि से. तो भागवतम में इसका वर्णन आता है 6ठे स्कंद में. चित्रकेतु महाराज एक बार विमान से अपने जा रहे थे तो वो देखा शिव जी कथा कर रहे हैं और साथ में पार्वती उनकी गोद में बैठी हुई है. तो उनको हंसी आ गई. तो बोलने लगे कि अरे शिव जी ये स्थान नहीं है यहाँ पे पार्वती माता को गोद में बिठाने का. But you see, when we try to evaluate everybody on the same level, everyone is not a Swami, everyone is not a brahmachari. So it might be a very highly advanced devotee, but he has a wife. So what is wrong in having familiar dealing with a wife? But 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒕 miscue, and then he got into trouble. तो इसी तरह कोई ब्रह्मचारी है, साधु है, वो हो सकता है अच्छा भक्त हो, बट कोई गृहस्थ जीवन में भी पत्नी के साथ भी रह के वो महान भक्त हो सकता है. तो उससे हमें वो बाहरी दृष्टिकोण से उसको नहीं देखना चाहिए. So thank you, Maharaji, for your question. Very nice. धन्यवाद महाराज आपका इस प्रश्न के लिए. We have about 2 more minutes. So okay. Maharaj, this section is talking about vain. So how he is misquoting scriptures. How he is misquoting scriptures. So Maharaj, we read Prabhupada books and everyone has his own level of understanding of Srila Prabhupada purports. So sometimes it happens that both parties seem to be correct, and someone may quote this thing from scripture that Prabhupada said this, and someone may quote this that Prabhupada said this. So how to get a mature and clear-cut understanding for reading Srila Prabhupada books? Because we may also act like vains in our preaching also. Yeah. Can you translate? तो यहाँ पे वेन का प्रसंग चल रहा है. तो वेन क्या शास्त्रों को दुरुपयोग कर रहा था अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए. तो हम भी देखते हैं भक्त लोग प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते हैं और अपने मस्तिष्क के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार उसके अलग अलग अर्थ कई बार निकालते हैं. तो कोई बोलता है प्रभुपाद जी ने ये बोला था, कोई बोलता है प्रभुपाद जी ने ये बोला था. तो इसमें हम कैसे एक परिपक्व दृष्टिकोण अपना सके प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का, क्योंकि कई बार हम भी वेन की तरह कार्य करने लग जाते हैं अपने प्रचार कार्य में अपनी शिक्षाओं का दुरुपयोग करके प्रभुपाद जी के. So that is a very important question, because sometimes you see Prabhupada says in a purport one thing, and in that purport he seems to say something that seems contradictory. तो कई बार ये आता है ये हमारे सामने चुनौती कि प्रभुपाद जी एक जगह ये कह रहे हैं, प्रभुपाद जी दूसरी जगह ये कह रहे हैं, तो दोनों जो हैं विरोधाभास लगते हैं.
So when we have that, it should not be a difficulty because we have a check and balance system, Guru, Sadhu and Shastra. तो हमें इससे परेशानी होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास 3 कसौटियां हैं, क्या गुरु, साधु और शास्त्र. So this is what our Guru has said. So he might say something here, another thing the other side. To our own, we may be thinking, this seems to be contradictory. We should make the judgment from the other two facelifts of the triangle, the Guru, Sadhu and Shastra, and see how we can marry the three. So, तो हो सकता है किसी के गुरु हो कुछ ये चीज बोल रहे हो, किसी के गुरु ये बोल रहे हैं, तो एक तो ये हो गया, तो दूसरे 2 पक्षों की हम सहायता ले सकते हैं, साधु और शास्त्र. तो उससे हम सामंजस्य बिठा सकते हैं कि क्या उचित सही है. And if we have deep knowledge of the scriptures and deep knowledge about Prabhupada's teachings, we'll find that in one situation, Prabhupada says something, maybe as a direct instruction to somebody. तो अगर आपको गहरा अध्ययन होगा प्रभुपाद जी की पुस्तकों का, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का, आपको समझ होगी गहरी, तो आप देखोगे कि एक समय पे कोई जो निर्देश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए है. So I'll give you an example. Okay, so somebody, husband and wife may be fighting all the time, and then Prabhupada has said, when you marry, no divorce. तो कई बार वो देखते हैं एक उदाहरण के रूप में, तो प्रभुपाद जी के समय में 2 पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे हो, तो प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं कि एक बार अब शादी हो जाएगी तो कोई भी तलाक नहीं. And this happens with any administrator, any guru, or any preacher in a movement. So, for the sake of the laws of the land, they may decide that, okay, better the both of you be apart so that you don't kill somebody and then that name becomes a bad reputation to the society. तो ये समय के पे भी निर्भर करेगा कि इतना लड़ रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे की हत्या ना कर दो, इससे अच्छा दूर हो जाओ दोनों, ताकि फिर आंदोलन के ऊपर, उस मूवमेंट के ऊपर कोई आक्षेप ना लगाए. I had the experience, one medical doctor, he had approached me to tell me about the situation she is facing in a marriage, and when she got this guy, she never consulted with the guru. She did not consult with a guru. She did not check any astrological charts, just attraction. So she decided, this is the person I'm going to marry. Then she brought her to her guru and said, I'm marrying this person. So the guru says, okay, I bless you. Go and suffer in the way that you want. तो महाराज बता रहे हैं कि वो जानते हैं एक व्यक्तिगत तौर पे कि एक महिला है, वो डॉक्टर हैं, वो उनका विवाह होता है किसी से, तो ना उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजी या किसी एस्ट्रोलॉजी में नहीं दिखाया और ना ही किसी अपने गुरु से उन्होंने सलाह ली, तो विवाह कर लिया खाली शारीरिक आकर्षण के आधार पे. जब विवाह करके वो लेके आई तो उनके गुरु ने उनका आशीर्वाद दिया कि जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जैसा करना चाहते हो वैसा करो. And so she approached me to give all this explanation. So she said, but I'm suffering so much in his marriage, and the guy is not working. I'm the one who is feeding him, maintaining him, everything. So what shall I do? I said, but you know that your guru didn't really like what you did, right? She said, yes, she knows, but she was infatuated. तो कुछ समय बाद आके बोलती है कि कुछ सही नहीं चल रहा, तो कोई देखभाल नहीं कर रहा मेरी, ना कुछ सही से जीवन चल रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूं. तो वो महाराज कहते हैं, वो उनकी शिष्या ही है, तो बोलते हैं कि देखो तुम्हें पता था कि जब तुम कार्य कर रही हो तुम्हारे गुरु को अच्छा नहीं लगेगा. कह रहे हाँ मुझे पता था, लेकिन मैं इतनी कामांध थी तो कि मैंने वो विवाह कर लिया. So she says she wants peace. Okay, I say you want peace, but your guru is not there to give you the verdict. He's passed away. What to do? She said, please, you tell me. I'll do anything you tell me.
Yeah. सो महाराज के शिष्या नहीं है, तो उनके गुरु का तिरोधान हो गया था, तो फिर वो आती है कि क्या करूं, मुझे मानसिक शांति चाहिए। कह रहे ठीक है मैं मानसिक शांति दे सकता हूं, लेकिन क्या करूं कि आपके गुरु तो है ही नहीं, गुरु तो चले गए। So I said, all right, see, you can't kill yourself in this relationship. Leave this man and go. तो बोला कि तुम अपनी हत्या तो नहीं कर सकोगी, तो इसलिए उस पुरुष को छोड़ दो। So sometimes we get into things we didn't get any authority from somebody, but when we get the bottleneck, we want someone to save us. But Krishna is so merciful, so he brings somebody who can save us. तो सामान्य परिस्थितियों में तो ये नियम है, बट कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि आपके गले तक बात आ जाती है, तो क्या करें फिर? तो कृष्ण किसी की व्यवस्था करते हैं, उसको भेजते हैं आपकी रक्षा के लिए। So the point is, we should be more careful with our devotional life. We should work with appropriate authorities. We should not think, for instance, someone wants to get married, and then they think, and I've seen so many girls who are victims of this. You know, they want to marry, and then the boy approaches them, and then they say, let me speak with my guru about it. The girl says, let me speak with my guru about it. And then the boy says, no, we are devotees. I mean, your guru is Swami. He says, Sayansi. Don't worry him with this man having to do with marriage. तो हमें अपने भक्ति के पथ पे सावधान रहना चाहिए। तो कई बार ऐसा हो चुका है, तो कोई स्त्री है, लड़की है, वो विवाह करना चाहती है किसी पुरुष से, तो बोलते चलो हम अपने गुरु से परामर्श लेते हैं। तो वो लड़का कहता है कि हम दोनों तो भक्ति हैं, और गुरु से क्या पूछना, गुरु तो सन्यासी है, साधु, उनको क्या पता होगा कैसे विवाह करना चाहते हैं, किससे विवाह करना चाहिए नहीं चाहिए। Okay, so then the girl says, and this happened to one of my friends from Mexico, you know, and then she says, can we do the astrological chart to see? Because sometimes the girls are marriageable age and they're very desperate for husband, and some men just took undue advantage of them. Undue advantage of them. Improper advantage of their desperation. So then she says, can we check the compatibilities? And then here the guy says, see, we are devotees, we are transcendental to compatibilities. तो महाराज के कोई परिचित हैं, तो एक बार क्या हुआ कि वो उनको विवाह करना था, तो वो अपने पुरुष मित्र जो है उनसे जिनसे विवाह करना था तो मिली, तो उन्होंने इनसे पूछा, महाराज ने पूछा कि ठीक है आप दोनों एक ज्योतिष को दिखा लो, तो क्या आपके बीच में क्या गुण दोष है उससे मिला लो। कह रहे हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो भक्त हैं, हम तो दिव्य स्तर पे हैं, हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। So, but then the question is, if you are so transcendental to the Vedic injunctions, then you don't need sex. तो प्रश्न यही है कि अगर आप इतने ही दिव्य हैं कि आप वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते, तो इसका मतलब आपको यौन जीवन जीने की भी जरूरत नहीं है। So I remember the case of this my friend, Mexican young lady, and you know she didn't consult with her Guru Maharaj. She's not my disciple, just we're friends. But then she gave in to the pressure, so they got married, and 6 months they divorced. तो वही बता रहे हैं वो मैक्सिकन लेडी का, उनके जो महाराज जो परिचित हैं, कि कैसे वो विवाह किया, गुरु थे नहीं, उनसे किसी पूछा नहीं उन्होंने, तो विवाह कर लिया, 6 महीने में उनका डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गया। So we have to be careful, you know, especially the ladies, they're very vulnerable. Our young ladies, they're very vulnerable. People can take undue advantage of them. So be careful. इसलिए आप सावधान रहे भक्ति के पथ पे, खास तौर से जो युवा महिलाएं हैं कि उनको शोषित किया जा सकता है आसानी से, तो कोई आपका गलत फायदा ना उठा सके, तो इसलिए आप सावधान रहें। श्रील प्रभुपाद की हिज होलिनेस भक्ति वासुदेव महाराज की जय। So thank you very much, Maharaj, for your wonderful class. As always, your explanation of the purports, your interaction with the devotees, question answers are very, very practical and insightful. And that is why all of us here look forward to your visit. So again, thank you very, very much, Maharaj. And whenever you are in Delhi region, NCR, please try your best to visit us as frequently as you can. Thank you very much. His Holiness Bhakti Vasudeva Swami Maharaj ki jai. Srila Prabhupada ki jai. So let us thank Maharaj for his visit here, for his class, by loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram